आज हम लोग क्या जानेंगे? द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, कितना भाग है सेंटेंस का? काइंड ऑफ सेंटेंस, कितना तरह का सेंटेंस होता है। तो चलिए जानते हैं। द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense is called a sentence. Sentence क्या है? A group of words which gives a complete sense is called a sentence. Example: he is playing football. They are going to park. She has written her homework. ये सारा का सारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग बोल रहा है, इसलिए ये सब सेंटेंस है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस का कितना पार्ट्स होता है, कितना भाग होता है। ए सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स। कितना पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स होता है। 3 भाग सेंटेंस का। देयरफॉर जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल: शी राइट्स ए लेटर। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइट्स यहाँ पर वर्ब, ये लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होता है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट को प्रेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट, काइंड ऑफ सेंटेंस। कितना तरह का सेंटेंस होता है? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कितना तरह का? 5 तरह का सेंटेंस होता है। जैसे देयरफॉर assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 तरह का सेंटेंस होता है। फर्स्ट हम लोग जानेंगे assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए स्टेटमेंट। assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए स्टेटमेंट। इट इज 2 टाइप्स। कितना तरह का है? 2 तरह का, 2 टाइप्स। इट इज 2 टाइप्स, affirmative पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वाला क्या है? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, एंड नेक्स्ट वाला क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग फर्स्ट जानेंगे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस क्या है। जैसे अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। एक सेंटेंस जो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता हो। एग्जाम्पल: ही राइट्स ए लेटर, दे प्ले फुटबॉल, शी गोज टू स्कूल। ये सारा का सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहा है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस विच मेक ओनली ए नेगेटिव स्टेटमेंट। A sentence which make only a negative statement. Example: he is not playing football. She does not write her homework. They have not read this lesson. ये सारा का सारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में बोल रहे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलने से क्या है? ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चंस और एंड्स विथ ए इंटरोगेशंस मार्क। ए सेंटेंस विच आस्क ए क्वेश्चंस और एंड विथ ए इंटरोगेशंस मार्क। एग्जाम्पल: Is she going to school? What is your name? Where are you going? Do you
लाइक पिक्चर। ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एक्सेट्रा। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, ओपन द डोर, रिंग द बेल। ये दोनों ही ऑर्डर दे रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी ए पेन, काइंडली हेल्प मी दिस टाइम। ये दोनों सेंटेंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ और काइंडली होने से हम लोग रिक्वेस्ट में आता है। नेक्स्ट, ओबे योर पेरेंट्स, वर्क हार्ड इफ यू want to pass। obey your parents, work hard if you want to pass। ये दोनों ही सेंटेंस एडवाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 4 नंबर क्या है? क्या बोल रहा है इसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलने से क्या है? ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग्स, sorrow or joy। Example, hooray, we have won the match। Alas, he has died, no more। Oh, it is a beautiful sight। Hooray, I have passed in the exam। Alas, he has failed। नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या बोल रहा है? क्या आएगा? 5 नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलने से ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश और डिजायर। ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए प्रेयर, विश और डिजायर। एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, may you live long। would that I were a king। would that my fathers were a rich man। ये सारा का सारा प्रेयर कर रहा है या विश कर रहा है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे। नेक्स्ट, पर्सन। सेंटेंस पढ़ने के लिए या फिर ग्रामर जानने के लिए पर्सन को भी जानना जरूरी है। तो हम लोग सेंटेंस पढ़ लिए, अभी पर्सन जानेंगे। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। पर्सन कितना तरह का है? 3 तरह का होता है। देयरफॉर जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई, मी, माई, वी, आवर, आस। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, ईट, देयर, देम, एनीथिंग्स और पर्सन इन द वर्ल्ड। ये सारा का सारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन में आता है। 3 तरह का पर्सन, काइंड ऑफ पर्सन। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, बोथ में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जानेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स क्या होता है? बेस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को इन 3 भागों में भाग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म,
second form of the verb past tense, third form of the verb past participle. तो हम लोग जब भी सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं या बात करते हैं इंग्लिश में, तो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, वर्ब्स का यूज़ करके ही सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और सेंटेंस को बोलते हैं कंप्लीटली। तो चलिए हम लोग जानते हैं बेस फॉर्म क्या है, पास्ट टेंस क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बी, was, were, being, beat, beat, beaten, become, became, become, begin, began, began, bend, bent, bent, bite, beat, bitten, bleed, bled, bled, blow, blew, blown, break, broke, broken, bring, brought, brought, build, built, built, burn, burnt और burned, burnt और burnt। ये दोनों में से आप एक यूज़ कर सकते हैं। burst, 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 buy, bought, bought, choose, choose, chosen, catch, caught, caught, come, came, come, creep, creeped, creeped, cut, 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 do, did, done, draw, drew, drawn, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, dill, dealt, dealt, dig, dug, dug, dream, dreamed or dreamed, dreamed or dreamed, eat, ate, eaten, fly, flew, flown, fall, fell, fallen, forgive, forgave, forgiven, forbid, forbid, forbidden, forget, forgot, forgotten, freeze, froze, frozen, feed, fed, fed, find, found, found, fight, fought, fought, fill, feel, felt, felt, feel, felt, felt, go, went, gone, give, gave, given, grow, grew, grown, grow, grew, grown, get, got, got, hide, hid, hidden, hang, hung, hung, hold, held, held, have, had, had, hear, heard, heard, heat, 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 hurt, 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 keep, kept, kept, know, knew, known, lie, lay, lame, laugh, laughed, laughed, let, let। आप इसमें कुछ कुछ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब तीनों ही सिमिलर देख सकते हैं, तो उसे रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। और कुछ कुछ जो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है और फर्स्ट फॉर्म चेंज है, और कुछ कुछ में फर्स्ट फॉर्म चेंज है और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसे इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट, lay, laid, laid, lead, 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 lane, lent, lent, lent or lend, learn, learned or learned, learned or learned, leave, left, left, lend, lent, lent, light, lit, lit, loss, lost, lost, mistake, mistook, mistaken, make, made, made, mean, meant, meant, meet, met, met, pay, paid, paid, paint, painted, painted, put, put, put,
prove, proved, proven. Read, read, read. Ride, rode, ridden. Ring, rang, rung. Rise, rose, risen. Run, ran, run. Say, said, said. See, saw, seen. Sail, sold, sold. Send, sent, sent. Sew, sewed, sewed or sewn. Shake, shook, shaken. Shine, shone, shone. Shoot, shot, shot. Show, showed, shown. Shrink, shrink, shrank, shrunk. Sing, sang, sang. Sink, sank, sunk. Sit, set, set. Sleep, slipped, slipped. Smell, smelt or smelled. Smelled or smelled. Speak, spoke, spoken. Speed, sped, sped. Spell, spelt, spelt. Spend, spent, spent. Spit, spat, spat. Spoil, spoiled or spoiled. Spoiled or spoiled. Spring, sprang, sprung. Stand, stood, stood. Still, stole, stolen. Stink, stunk, stank, stunk. Stick, stuck, stuck. Sweep, swept, swept. Swing, swung, swung. Swim, swam, swum. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tear, tore, torn. Tell, told, told. Think, thought, thought. Think, thought, thought. Throw, threw, thrown. Understand, understood, understood. Walk, wake, wake, walk, walking. Wake, walk, walking. Wear, or, on. Write, wrote, written. Win, won, won. Weaned, wound, owned. तो यहाँ पर हम लोग क्या 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 पढ़े हैं? Verbs, 3 forms of the verbs. 3 forms of the verbs में first form of the verbs जो base form है, second form of the verb जो past tense है, third form of the verbs जो past participles है. The tense. The tense क्या है? The tense of verb shows the time when an actions take place. The tense क्या है? The tense of verb shows the time when an actions take place. Principally there are 3 tense. Principally there are 3 tense. Tense कितना तरह का होता है? 3 तरह का. Present tense, past tense, future tense. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी सब डिवाइड में डिवाइड किया जाता है. क्या? इन ऑर्डर टू शो एट what stage the actions in each tense is subdivided into 4 heads. In order to show at what stage the action is each tense is subdivided into 4 heads. जैसे indefinite tense, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. सब डिवाइडेड में इन 4 भागों में भाग किया जाता है.
प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को। कैसे? जैसे therefore प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शंस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शंस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल्स, when subject are first or and second person and plural noun, I, me, my, we, our, us, you, your, yours. Therefore जैसे affirmative positive sentence, subject first form of the verb plus object, negative sentence, subject do not plus first form of the verb plus object, interrogative sentence, do plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. Example, I go to school, we do not play now, do you read these lessons? Interrogation marks. आप यहाँ पर देख सकते हैं रूल्स का हिसाब से, फॉर्मूला का हिसाब से एग्जाम्पल दिया गया है। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटीग्रेशन मार्क। आप एग्जाम्पल को भी देखिए। एग्जाम्पल, I go to school, do not, we do not play now, do you read this lesson? Next rules क्या है? When subject a third person and singular noun he, she, it, Ram, Sita, etc., then added s or es with verb. When subject a third person or singular noun he, she, it, Ram, Sita, etc., then added s or es with verb. verb का संग s और es joint हो जाएगा। therefore जैसे affirmative positive sentence, subject plus first form of the verb plus s or es plus object. negative sentence, subject plus does not plus first form of the verb plus object. Interrogative sentence, does plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. Example, he goes to market. Ram does not play football. Does he work his homework? Does he write his homework? Interrogation marks. आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का, ही गोज टू मार्केट। नेगेटिव सेंटेंस, राम डज नॉट प्ले फुटबॉल। इंटरोगेटिव सेंटेंस, डज ही राइट हिज होमवर्क? इंटरोगेशन मार्क्स। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट यूजेस क्या है? हैबिचुअल एक्शंस इन द सेंटेंस, always, never, seldom, often, sometimes, daily, regularly, every day, every week, every month, every year, once a week, twice a week, etc. Adverbs will present. Example क्या है? I take bath early morning every day.
She goes for a walk every morning. They play football at 4 p.m. daily. Next uses क्या है? General और universal truth. General और universal truth क्या है? Example: the sun rise in east. The sun set in west. The earth moves round the sun. The sun gives light in the day. The moon shines at night. Next, third uses क्या है? Permanent truth. Example: this road leads to hospital. This road leads to hospital. Agra stands on the bank of the Yamuna. Agra stands on the bank of the Yamuna. Cellular gel stands on the bank of seashore. Next, present continuous tense. Present continuous tense क्या है? To express an actions that is going on the present time. Present continuous tense क्या है? To express an actions that is going on the present time. Rules. Positive sentence क्या है? Subject plus am is a plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence: subject plus am is a not plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence: am is a plus subject plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. When use am is a, कब हम लोग am is a को यूज़ करेंगे? am हमेशा I का संग यूज होता है. is, he, she, it एनी सिंगुलर नाउन का संग यूज होता है. are, you, they, we एनी प्लूरल नाउन का संग are यूज होता है. am, I, is, he, she, it एनी सिंगुलर नाउन. are, you, they, we एनी प्लूरल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल: I am playing football. She is writing a letter to her father. They are revising their lessons. He is not sleeping now. We are not working here. Are you going to market? Interrogation marks. Is he reading this book? Interrogation marks. Next, uses of present continuous tense. Present continuous tense का uses क्या है? First uses to express an actions in which these days, now, nowadays, still, at this time, at this moment, at present, etc. Adverb is present in the sentence. Present continuous टेंस का यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फर्स्ट यूजेस टू एक्सप्रेस एन एक्शंस इन विच these days, now, nowadays, still, at this time, at the moment, at present, etc. Adverb is present in the sentence. Example: they are working in this building nowadays. He is playing football at this time. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू इंडिकेट एन एक्शंस दैट इज प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू इंडिकेट द एक्शंस दैट इज प्लान्ड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर. एग्जाम्पल क्या है? आई एम गोइंग टू कोलकाता ऑन टुमारो. दे आर प्लेइंग क्रिकेट ऑन संडे. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शंस दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन फिनिश्ड. रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस: सब्जेक्ट प्लस हैज हैव
plus not plus third form of the verb plus object. Interrogative sentence, has, have plus subject plus third form of the verb plus object plus इंटरोगेशन मार्क्स. हैज़ हब कब यूज होता है? हैज़ का यूज ही, शी, ईट, एनी सिंगुलर नाउन. और हैव का यूज यू, आई, दे, वी, एनी प्लूरल नाउन. तो हैज़ किसका संग यूज होएगा? ही, शी, ईट, एनी सिंगुलर नाउन. और हैव किसका संग यूज होएगा? यू, आई, दे, वी, एनी प्लूरल नाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? I have written a letter to my father. I have written a letter to my father. He has played Ludo. She has not cooked dinner. They have not finished their work. Have you completed your work? Next, uses of present perfect tense. Uses of present perfect tense. क्या uses है present perfect tense का? First uses to express an actions in which before, once, twice, thrice, several times, etc. present in the sentence. Uses of present perfect tense क्या है? First uses to express an actions in which before, once, twice, thrice, several times, etc. present in the sentence. Example क्या है? I have seen this film before or several times. They have not written their homework till. They have not written their homework till. Next uses क्या है? To express an actions in which already, so far, as yet, just, now, till now, recently, presently, this week, this month, this year, etc. present in the sentence. Next uses क्या है? To express an actions in which already, so far, as yet, just now, till now, recently, presently, this week, this month, this year, etc. present in the sentence. Example क्या है? She has passed class 12th already. We have not taken our breakfast as yet. Next, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense क्या है? An actions that began in the past and is still going on. Present perfect continuous tense क्या है? An action that began in the past and is still going on. Rules क्या है? Positive sentence subject plus has, have plus been plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence subject plus has, have plus not been plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence has, have plus subject been plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. इसका संग since और for भी यूज होएगा. आप हमेशा याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का संग कंटिन्यूस में ing ऐड हो जाता है और इसका संग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस और फॉर भी सेंटेंस में यूज होएगा ऑब्जेक्ट का बाद. सिंस और फॉर कब यूज होएगा? व्हेन वी यूज सिंस और फॉर. सिंस यूज विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम, विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम. और फॉर यूज विथ ए पीरियड ऑफ टाइम. सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे he has been eating breakfast since 7:30 a.m. He has been eating breakfast since 7:30 a.m. I have been writing my homework for 2 hours. They have been playing football since
4 p.m. She has been cooking food for 1 hour. Children have been swimming in the pool since 3 p.m. Next, uses of present perfect continuous tense. Uses of present perfect continuous tense. क्या uses हैं? To express an actions that is begun in the past and still going on. Uses of present perfect continuous tense क्या है? To express an actions that is begun in the past and still going on. Example क्या है? I have been living in this house for 2 years. She has been waiting for you for 1 hour. They have been working in this building since last month. Next, past indefinite tense or simple past tense. Past indefinite tense or simple past tense क्या है? An actions that act in the past. Past indefinite tense और simple past tense क्या है? An actions that act in the past. Rules क्या है? Positive sentence. Subject plus second form of the verb. Object plus object. Positive sentence क्या है? Rules. Subject plus second form of the verb plus object. Negative sentence. Subject plus did not plus first form of the verb plus object. Interrogative sentence क्या है? Did plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. Example क्या है? I went to school. She did not like coffee. Did he write this letter? Interrogation marks. Next, uses of past indefinite tense. Uses of past indefinite tense. First uses क्या है? To express an actions in which past time is indicated by yesterday, last day, last month, last week, last year, ago, etc. Uses of past indefinite tense क्या है? First uses to express an actions in which past time is indicated by yesterday, last day, last month, last week, last year, ago, etc. Example, I drew this picture last year. She won a prize last month. They did not play football last Sunday. We did not go to picnic last week. Next uses क्या है? Second uses to express an actions which occupied a period of time in the past which is now ended. Next uses क्या है? To express an actions which occupied a period of time in the past which is now ended. Example क्या है? He lived in Delhi for 2 years. They worked in this building for 3 months. We wrote our homework for 3 hours. Next, past continuous tense. Past continuous tense क्या है? An actions that was going on in the past time. Past continuous tense क्या है? An actions that was going on in the past time. Rules क्या है? Positive sentence, subject plus was were plus first form of the verb plus ing plus object. Positive sentence क्या है? Rules, subject plus was were plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence, subject plus was were plus not plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence, was were plus subject
plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. was where का यूज़ कब होएगा? when we use the was where. was का यूज़ I, he, she, it, any singular noun. was का यूज़ किसका संग होएगा? I, he, she, it, any singular noun. और where का यूज़ you, they, we, any plural noun. where का यूज़ किस में होएगा? किसका संग? you, they, we, any plural noun. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी वॉज राइटिंग ए लेटर. दे वेर स्लीपिंग एट दैट टाइम. वी वेर गोइंग टू पिकनिक. ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. राम वॉज नॉट प्लेइंग एट दैट टाइम. वॉज शी कुकिंग फूड? क्वेश्चन मार्क्स. नेक्स्ट uses of past continuous tense. uses of past continuous tense. first uses क्या है? to express an actions that was going on in the past time. past continuous tense when past indefinite tense. uses of past continuous tense क्या है? first uses to express an actions that was going on in the past times. पास्ट कंटिन्यूस से लेके व्हेन और उसका बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिर से यूज होएगा. फॉर एग्जाम्पल कैसे? शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन यू केम. शी वॉज रीडिंग ए बुक व्हेन यू केम. दे वेर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन शी सेड. वी वेर डांसिंग व्हेन ही वेंट. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस टू एक्शंस व्हेन इट वॉज गोइंग ऑन साइड बाय साइड, देन बोथ सेंटेंस मस्ट बी रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट यूजेस क्या है? टू एक्सप्रेस टू एक्शंस व्हेन इट वॉज गोइंग ऑन साइड बाय साइड, देन बोथ सेंटेंस मस्ट बी रिटन in past continuous tense. example, well, she was reading. Her brother was writing. well, they were playing football. He was sleeping. next, post perfect tense. post perfect tense क्या है? an actions that completed at the past times before another actions was begin. past perfect tense क्या है? an actions that completed at the past times before another actions was begin. rules क्या है positive sentence? subject plus first form of subject. positive sentence क्या है? subject plus had plus थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इंटरोगेटिव सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क्स. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड plus third form of the verb plus object. negative sentence subject plus had not plus third form of the verb plus object. interrogation sentence interrogative sentence had plus subject plus third form of the verb plus object plus interrogation mark. next example क्या है? the thief had left the place before the police came. the thief had left the place before the police came. the patients had died before the doctor came. the train had left the stations before I reached there. the bell had rung before I reached school. next, uses of past perfect tense. uses of past perfect tense. फर्स्ट यूजेस क्या है?
an actions had completed before another actions began. Uses of past perfect tense क्या है? First uses, an actions had completed before another actions began. Past perfect tense before past indefinite tense. Example, the rain had started before my father went to office. I had written my homework before my friend came. I had written my homework before my friend came. My breakfast had done before 9 o'clock. Next is क्या है? An actions began after mother actions had completed. Next is क्या है? An actions began after mother actions had completed. Past indefinite tense after past perfect tense. Example क्या है? The police came after the thief had gone. The police came after the thief had gone. I reached there after the train had left the station. I reached there after the train had left the station. Next, past perfect continuous. Past perfect continuous tense क्या है? An actions that was finished in the past but which had been going on before it was finished. Past perfect continuous tense क्या है? An action that was finished in the past but which had been going on before it was finished. Rules क्या है? Positive sentence, subject plus had plus been plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence, subject plus had plus not been plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence, had plus subject plus been plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. इसका संग सिंस और फॉर भी यूज़ होएगा. सिंस और फॉर का यूजेस क्या है पहले भी हम लोग जाने हैं तो आपको याद होएगा. सिंस का यूज़ विथ ए पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का यूज़ विथ ए पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years. He had been working in this building since October 1996. They had been revising their task for a week. They had been revising their task for a week. Next, future indefinite tense और simple future tense. Next क्या है? Future indefinite tense और simple future tense. क्या है? An action that is yet to happen. Future indefinite tense और simple future tense क्या है? An actions that is yet to happen. Rules क्या है? Positive sentence, subject plus shall or will plus first form of the verb plus object. Negative sentence, subject plus shall or will not plus first form of the verb plus object. Interrogative sentence, shall or will plus subject plus first form of the verb plus object plus interrogation marks. शैल और विल का यूज कब होएगा? शैल किसका संग यूज होएगा? आई, वी, यू और फर्स्ट और सेकंड पर्सन. विल का यूज कब होएगा? ही, शी, ईट, राम, दे और थर्ड पर्सन का संग विल यूज होएगा. शैल का यूज आई, वी, यू और फर्स्ट और सेकंड पर्सन का संग. विल का यूज ही, शी, ईट, राम, दे और थर्ड पर्सन का संग यूज होएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल गो टू स्कूल. ही विल प्ले फुटबॉल. दे विल सिंगिंग ए सॉन्ग. वी शैल नॉट बाथ इन द रिवर.
Will Ram write his homework? I shall go to school. He will play football. They will sing a song. We shall not bath in the river. Will Ram write his homework? Interrogation mark. Next, uses of future indefinite tense. First usage क्या है? Uses of future indefinite tense to express an actions in which future times is indicated by tomorrow, next day, next week, next month, next year, etc. Uses of future indefinite tense. First uses क्या है? To express an action in which future times is indicated by tomorrow, next day, next week, next month, next year, etc. Example क्या है? I shall go to Agra tomorrow. They will play cricket next Sunday. She will write this question's answer next week. We shall depart for Kolkata next year. We shall depart for Kolkata next year. Next uses क्या है? To express an actions in which future indefinite tense is written after the adverbial clauses. Therefore, in the sentence must be have if, unless, when, etc. Next uses क्या है? To express an actions in which future indefinite tense is written after the adverbial clauses. Therefore, in the sentence must be have if, unless, when, etc. Example: if you work hard, you will pass. Unless you meant you wish, you will never success in life. When you come to my home, I shall play football. When you come to my home, I shall play football. Next, future continuous tense. Future continuous tense क्या है? An actions that will going on at some times in the futures. Future continuous tense क्या है? Future continuous tense an actions that will going on at some times in the future. Rules क्या है? Positive sentence subject plus shall or will plus be plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence क्या है? Subject plus shall or will not be plus first form of the verb ing plus object. Interrogative sentence क्या है? Shall or will plus subject plus be plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. Next, example क्या है? I shall be. Example क्या है? I shall be cooking at this time tomorrow. I shall be cooking at this time tomorrow. She will not be singing a song. Will they be playing football at this time next week? Next week. Interrogations mark. Will they be playing football? Will they be playing football at this time next week? Interrogations mark. Next, future perfect tense. Future perfect tense क्या है? An action that will be completed at some point of time in future. Future perfect tense क्या है? An actions that will be completed at some point of time in future. Rules क्या है? Positive sentence subject plus shall or will plus have plus third form of the verb plus object. Negative sentence subject plus shall or will plus not have plus third form of the verb plus object.
Interrogative sentence. Interrogative sentence. Shall or will plus subject plus have plus third form of the verb plus object plus interrogation marks. Next example क्या है? I shall have written your money. I shall have written your money. She will have gone to Port Blair. They will not have revised their lesson. I shall not have taken a bath before the sun set. Will he completed his work? Interrogation marks. Shall you have got ready before the bus arrived? Shall you have got ready before the bus arrived? Interrogation marks. Next, future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense क्या है? An action which is going on continuously in the future and will be completed in the future. Future perfect tense, future perfect continuous tense क्या है? An action which is going on continuously in the future and will be completed in the future. Rules क्या है? Positive sentence. Subject plus shall or will plus have been plus first form of the verb plus ing plus object. Negative sentence क्या है? Subject plus shall or will not have been plus first form of the verb plus ing plus object. Interrogative sentence क्या है? Shall or will plus subject plus have been plus first form of the verb plus ing plus object plus interrogation marks. Next example क्या है? I shall have been staying at my uncle's home at the time of summer vacations. Example क्या है? I shall have been staying at my uncle's home at the time of summer vacations. She will have been doing this sum for 10 minutes. She will have been doing this sum for 10 minutes. Will they have been working in this office for 3 years? Question marks. Will they have been working in this office for 3 years? Question marks. Thank you.